सो हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर बीइंग लेट, थोड़ा सा स्टकअप थी कामों में। सो कितने दिन रह गए? जस्ट हार्डली मे बी 10 डेज। आज क्या डेट हो गई है? 10 डेज भी नहीं है, आज 12 तारीख है। 9 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, रैदर जस्ट 1 वीक रह गया। सो हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ? अभी लोग और ज्वाइन करेंगे। सो मैं डॉक्टर सोनल परिहार, मेरा introduction you all know. I am a gynecologist working in Jodhpur in my own private hospital, and I have my own 2 YouTube channels जिसमें कि Ask Your Gynecologist and Dr. Sonal's Tutorials, 2 तरह के मेरे channels हैं, and you must be quite aware of that. Where is my pen? Yes. So Ask Your Gynecologist and Dr. Sonal's Tutorials. Okay. So why am I not getting this? Second. So sorry. So आज हम सिर्फ MCQs करेंगे और इवनिंग में भी हम MCQs कंटिन्यू करेंगे बिकॉज दैट इज़ माई सेकेंड चैनल, दैट इज़ डॉक्टर सोनल्स ट्यूटोरियल्स। इसमें आपको काफ़ी गायनिक के लेक्चर्स मिलेंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अलग अलग वीडियोस की। जब आपको लगे कि आपके पास टाइम है आप पढ़ लेना, ठीक है, आप सुन लेना। सो प्लस सब्सक्रिप्शन में बच्चों आपको मिलता है अनअकैडमी ओनली। अनअकैडमी के सारे 19 ट्यूटर्स के सारे लेक्चर्स, PDF नोट्स एंड ऑफ कोर्स MCQs एंड ऑल द ग्रैंड टेस्ट दैट वी डू। आइकॉनिक में साथ में प्रेप लैडर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उनका भी मटेरियल सारा मिलता है। सो दैट्स अ वेरी गुड सब्सक्रिप्शन, आपके पास टाइम हो तो। बट अभी 7 दिन बाद एग्जाम है तो ऑब्वियसली अभी कुछ नहीं करना है। ये लर्निंग फेस्टिवल यू शुड अवेल दिस, वेरी वेरी नाइस इट इज़ डॉक्टर सोनल का कोड लगाओगे आप तो 299 ओनली 300 रुपीज़ का आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें कि 1 मंथ की वैलिडिटी है। 1 मंथ की वैलिडिटी, जो 1 मंथ का बैच था वो जितना देख सकता है वो सारा का सारा आप ये 7-8 दिनों में देख पाओगे। सो 16 तारीख को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तब तक अगर आप डॉक्टर सोनल का कोड लगा के आप खरीदते हो ये, तो आपको सारे 19 सब्जेक्ट्स के PDF नोट्स, लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स इंक्लूडिंग 25,000 MCQs मिल जाएंगे। तो जो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जो बच्चों ने खरीदा था, जो कि शायद 4 या 5 हज़ार का था, वो आपको 300 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, ये ऑफर जल्दी ही खत्म होने वाला है। मैं ये हेल्पलाइन नंबर लिख रही हूँ 85 सो दैट इज द हेल्पलाइन नंबर। कॉल देम, टेल देम कि मेरे को ये खरीदना है। ऑफकोर्स सारा मटेरियल तो नहीं पढ़ पाओगे, बट कई बार होता है ना कुछ टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे, तो जब आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा तो यू कैन स्क्रॉल थ्रू, क्या चलो ये वाला देख लेते हैं, ये टॉपिक देख लेते हैं, इस डॉक्टर का लेक्चर, इस ट्यूटर का लेक्चर सुन लेते हैं, MCQs कर लेते हैं। बैठ के 25,000 MCQs तो 10 दिन में सॉल्व कर ही लोगे, आराम से कर लोगे, है ना। सो गो फॉर इट, इट इज़ अ वेरी बम्पर ऑफर, इट इज़ अ फेस्टिवल एक्चुअली दे आर सेलिब्रेटिंग। सो यू कैन जस्ट सी दैट। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 25,000 MCQs एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ठीक है। देन नीट PG का लाइट सब्सक्रिप्शन मैं हर बार बताती हूँ, दैट इज़ फॉर ऑल द MCQs। अगर आपको सिर्फ MCQs चाहिए तो ये अभी भी अवेलेबल है, इसकी लेटेस्ट जो भी रेट चल रही है। परसों संडे को, सॉरी नॉट संडे, परसों क्या है, टुडे इज़ थर्सडे, हाँ, तो परसों यानी कि सैटरडे को आपको ये टेस्ट मिलेगा 9 बजे सुबह, जो कि हमेशा संडे को होता है, बट इस बार 1 हफ्ते पहले, क्योंकि आपका 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, तो 14 तारीख को उन्होंने टेस्ट रखा है 9 बजे। और ये फ्री टेस्ट होता है, आपको सिर्फ वहाँ पर जाके मेरा कोड यूज़ करना है डॉक्टर सोनल, और इसको अनलॉक करना है, ठीक है। डॉक्टर सोनल यूज़ करते अनलॉक हो जाएगा। ये बैच खत्म हो रहा है 15 मई को, और ये बैच अभी भी चल रहा है FMG का। ये 1 मंथ का बैच है, क्योंकि आपका एग्जाम 4 जून को है। सब्जेक्ट सेम है, टॉपिक सेम है। अगर आपने FMG का बैच नहीं ज्वाइन करा है, आप मेरे लेक्चर सुनना चाहते हो तो बिल्कुल सुनो, क्योंकि सेम टॉपिक्स हैं, ठीक है। नीट PG का सब्सक्रिप्शन जो 10% डिस्काउंट वाला है, वो ये रेट्स चल रही है। ये उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम अभी नहीं है, या फिर एग्जाम के बाद वापस तैयारी करनी है, तो 6 मंथ्स का आइकॉनिक और 2 मंथ्स का प्लस सबसे कम होता है, और लाइट वाला 2 मंथ्स का, इसमें सारे आपको MCQs मिलते हैं, वेरी वेरी चीप रेट, ठीक है। ये कल यानी कि 11 तारीख को हो चुका है हाई यील्ड रिवीजन। कल पूरा आपका FMG का बैच का रिवीजन हो चुका है। नीट प्रैक्टिस लीग, अब ये आप देख सकते हैं, अभी कौन सी 12 तारीख चल रही है, तो आज 10 बजे रेशम वसानी का हो गया होगा, और सॉरी रात में है, 10 PM है। इसी तरह से रात के 10 PM 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख सब रात के 10 बजे है। सारे डिफरेंट टेस्ट है। OBG इसमें नहीं है। MBBS Prof 1 की ये रेट्स चल रही है 10% डिस्काउंट के बाद। यू हैव टू कोड यूज़ माई कोड डॉक्टर सोनल, ठीक है। इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एनाटॉमी, बायोकेम एंड फिजियोलॉजी। ऑटो डेली प्रैक्टिस ओनली फॉर द प्लस क्लासेस, जिन्होंने प्लस का पेमेंट किया है उनके पास ऑप्शन आता है टू डू एनी टेस्ट ऑन द अनअकैडमी ऐप। ये इवनिंग में वापस 4:30 PM हम मिलेंगे, स्पेशल क्लास है जैसे कि डेली हो रही है। देन प्लस टेस्ट कैलेंडर, ये मैंने आपको बता ही दिया। कुछ फ्री टेस्ट होते हैं, कुछ प्लस टेस्ट होते हैं, प्लस यानी कि पेड टेस्ट है, तो यू कैन जस्ट कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर। प्रीवियस 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप खरीद सकते हैं। ये बैच शुरू हो रहा है 23 मई से, और एक पहली क्लास 14 को है, यानी कि परसों है, जिसमें कि मैं ओरिएंटेशन कराऊंगी आपका। मैं OBGY ट्यूटर रहूंगी इसमें, दैट इज़ मी हियर टीचिंग यू OBGY।
एंड दिस इज़ योर पीडियाट्रिक्स टीचर, सर्जरी टीचर, मेडिसिन टीचर एंड PSM. यही 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम. ठीक है, अब ये 2 बैचेज हैं, 1 मंथ एंड 2 मंथ के. तो ये 2475 ओनली है, 4500. 1.5 महीने में हम पूरा कोर्स खत्म करेंगे वापस से नीट PG के बाद, अगर आपको 17 जुलाई को एग्जाम देना है तो. ठीक है, नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन दैट वी लेफ्ट यस्टरडे. कल हमने स्पेशल क्लास में 121 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अब हम इसके आगे चलेंगे. देयर यू गो. कल हमने यहाँ ख़त्म किया था. कॉमनेस्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड प्रेजेंटेशन वाज हेड विद हैंड, जिसमें बच्चा इस तरह से हाथ रख के विजाना पे प्रेजेंट करता है. सो प्रेजेंटेशन इज हेड विद हैंड. एंड लीस्ट कॉमन इज हेड, हैंड एंड फुट, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि सिर पे हाथ और पैर दोनों आ जाए. ठीक है, सो दैट इज द लीस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन. देन हेगार साइन क्या होता है? टेल मी, what is Hagar sign? You have to write down the answer. Good morning Akshay, good morning Bala, good morning Swati. So you have to write down the answer with the question number 1 to 2, and then you write A, B, C, D. Hagar sign. Okay, 122D, very good. Anybody else? Okay, so this is what? This is Jackmere sign या फिर Chadwick sign, है ना? JCV. Quickening is not a sign. Uterine contraction will be Palmer's sign. So it is softening of the isthmus. Okay, it is softening of the isthmus, which is the Hagar sign. Present in 2/3 of the cases, demonstrated in 6 to 10 weeks, because जो lower segment है वो एकदम soft हो जाता है. Sign is based upon the fact that upper body is enlarged by the growing fetus, lower part is empty and extremely soft just above the cervix. Cervix is comparatively firm. So when you do a bimanual examination, you are feeling the uterus. So uterus को जब feel करते हैं तो you can easily palpate, you can easily approximate your fingers. एक hand आपका vagina में है और एक hand आपका abdominally यहाँ से palpate कर रहा है, तो आपके ये दोनों hands approximate हो जाते हैं because of this softening of the lower segment. ठीक है, because of variation in the consistency on bimanual examination, 2 fingers in the anterior fornix and abdominal fingers behind the uterus, the abdominal and vaginal fingers seem to oppose below the body of the uterus. Question number 123. Chadwick sign, Bala, Swati. Chadwick sign was the Jackmere sign, that is bluish discoloration of the vagina. Okay, pregnant women going for long journey and prolonged sitting is associated with danger of what? 123. When they sitting for a long time, long journey में, तो क्या हो सकता है? Thromboembolism, seat belt compression, preterm labor या फिर bleeding. Good morning Swaraj. Okay, Afsan A, Akshay A. That is the way to write 123 and then A, B, C, D. That is the right way. Okay. Yes, so we will go with A, that is thromboembolism. Prolonged sitting in the car or aeroplane, especially the low pressure flights or the low pressure traveling जो तरीका होता है, that is air flights and all. Long flights, they are very low pressure, so that is the time when you have to tell the patient to keep moving her fingers, the toes especially, keep drinking lots of water, clear fluids, no alcohol, more of juices, and she should be trying to move around, and she should book herself an aisle seat where she has a capacity or the space to spread her legs and keep moving her fingers. Okay, so that is the thing. So it is thromboembolism. This is the long flights and long journeys are avoided to prevent venous stasis or thromboembolism. 124. Head of the baby is removed in breech delivery by which maneuver? Lofset's maneuver, Pinard's maneuver, Prague maneuver या फिर Burn Marshall. Head of the baby. Yes, due to low venous return, Swaraj, you are right. Okay, come on, Akshay, Swati, Swaraj, Geetika. You people are answering. Who else? Bala. So we have 9 people watching and you 5 people are very active. So we have one answer, 124. Okay, 2 answers, C and D. D. Okay, so what is the answer? It is Burn Marshall method. You know what is Burn Marshall method? Basically the entire body of the baby has come out and even the shoulders have come out, and now you can see the nape of the neck. So when you can see the nape of the neck, this particular part of the neck, and the entire body is hanging out, then you just
catch hold of both the limbs and you turn the baby up, okay, and that is how you cause delivery by extension of the head. That is Bern-Marshall method, okay. So it is Bern-Marshall. Prague maneuver is used for what? After coming head in breech, deep transverse arrest, that is arrest, extraction of the arrested arms, extended arms, and external cephalic version. 125. Prague maneuver. Okay, 125. It is actually A. You all are correct except for one few of you. After coming head in breech, sometimes the head rotates posteriorly so that the face is behind the pubes. Delivery in this position is difficult and Prague maneuver may be tried. I don't have a photograph to show you, but if you can check, it must be in your books, right? You must have read this. So when the baby's head is not coming like this, you cannot see the nape of the neck. It is actually OP position. So basically the nose and then the face, this is how the baby is coming out. So baby is coming out with the face up, and then how do you deliver? So that is a position, that is a maneuver in which you catch hold of the shoulders and you basically support the one second, you are catching hold of the shoulder and grasping it below by one hand, and while the other hand is supporting the legs. So Bern-Marshall, you're just pulling the leg up and you're extending the head, because the head is, the face is towards the anus, but here it is opposite, okay. So here you have to grasp the shoulders, again you have to pull the legs up, and then you have to slowly deliver the head. So that is difficult, very difficult, okay. So that is Prague maneuver. So don't get confused. Head of the baby is removed in breech delivery by which maneuver? Actually, some of you wrote Prague also. This should have been the normal maneuver in which the head is not face to pubes. It is a normal, the occiput is below the symphysis pubis. So that's a bit confusing, right, for you. So, but both are for the after coming head in the breech, okay. Then, trial of labor in previous cesarean section can be done where? Placenta previa type 3, previous 2 classical cesarean sections, suspected CPT, previous cesarean with adequate pelvis. Trial of labor. Trial means you are kind of suspecting कि शायद maybe हो जाए, but it is like a trial because she is basically not having her own pains. You have to induce her. So what will you do? In which case you can give that trial? In which you think will not be like, you have a good fair chance, 70-80% chance that she might deliver. Good. So it is previous cesarean with adequate pelvis, okay. Now the thing is suspected CPD, कई लोग बोलते हैं suspected CPD में क्यों नहीं? Now because you're already suspecting CPD, so let this patient go into labor. Generally in your books it is written, whenever we do MCQs, how do you diagnose CPD? That is when you give a trial of labor. If the trial of labor fails, that means it was CPD. But when it is already written suspected CPD, and if you read the option D, this sounds much better. Initially अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो इन तीनों में ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि सस्पेक्टेड CPD है, you don't know, we cannot diagnose CPD by anything, so it is better to give a trial of labor. But in this case, fourth answer sounds much better. Adequate pelvis is an indication of trial of labor. Other 3 options are contraindications, okay. So depends how they have asked the question and what are the options. Now hematoma during labor is not due to improper hemostasis. It is not due to, not, okay. Extension of cervical laceration, rupture of paravaginal venous plexus, obliteration of dead space while suturing the vaginal wall. So hematoma जो बनता है collection of blood under the mucosa, which can lead to shock, hemorrhagic shock. Sometimes you cannot actually diagnose because it is just bleeding inside, and if you don't examine properly, you can't see that bulge also. You can't understand why she's going into shock. So what will not cause hematoma?
Placenta previa 3 cannot be tried, placenta previa 2 can be tried, because in that case placenta previa 2 may, if the baby's head has crossed the level of the placenta where it is just at the level of the internal os, that is your placenta here, and the os is opening, okay, in that case you can try, but not in type 3, because type 3 is already very I'm telling you now, it depends upon what kind of options they are asking. So in type 3 placenta previa अगर बाकी सारे options like classical cesarean section होता और ये suspected की जगह extremely contracted pelvis होता, android pelvis होता, then you have probably selected placenta previa 3, but इसमें best option D लग रहा है. Placenta previa 3 में you can say that yes, it is when the os will dilate, it will not completely block the passage. So but 3 and 4 are basically high grade, so you will not do a trial of labor. If she comes in labor and you see that the presenting part has already crossed the placental layer, then maybe yes, you can. But then mind it, when the presenting part will come down, the placenta previa type 3 will get compressed, and that compression will lead to fetal distress, and then you will be like, what to do now, because then you'll have to rush for cesarean section. So it's better if it is written type 3, type 4, that is high grade placenta previa, don't say trial of labor or normal delivery unless the patient is coming fully dilated, okay. So yes, depending upon the options, Akshay, in this case the option was D, very clear. 127 D, yes, we have one answer, and that is true. Bala, you are true, you're right. Obliteration of the dead space is actually treatment. We are treating hematoma or preventing hematoma. This is what we do. We prevent hematoma by obliterating the dead space. Whatever dead space is, the ischiorectal fossa sometimes opens up because of deep episiotomy or tear. In that case, just dead space is obliterated by suturing, so that no hematoma, no bleeding vessel causes formation of hematoma. Failure of obliteration causes hematoma, not obliteration. Okay, so that is the prevention. Now, treatment of jaundice in third trimester. What is the treatment of jaundice in third trimester? Termination of pregnancy, termination at 42 weeks, termination at 38 weeks, wait for spontaneous labor. She has developed jaundice in the third trimester. Swaraj Suman, we are on 128. It is 127D actually, not B. Extension of the cervical laceration can cause vaginal hematoma, because now it has extended into the vaginal wall also. Okay. 128A. May be a case of AFLP, acute fulminating liver. Well, see, they're just saying jaundice, so you can't just assume what they are planning. Okay, just a simple jaundice. Okay, we have different answers, A, C, D. So what's the answer? The answer is C. It is 38 weeks. So you don't have to wait till 40 weeks, because technically after 37 weeks she is basically termination stat as long as soon as she's diagnosed with jaundice. You don't have to terminate the pregnancy, treat it. If it is a mild jaundice, so theek ho jayega, unless it is going to acute fulminating liver disease. And wait for spontaneous labor, no, she's already developed jaundice in the third trimester, so you have to terminate at the time when you assume that everything is fine. Okay, the baby is also basically grown well and has gained weight. So in patients of intrahepatic cholestasis, that is obstetric cholestasis, one of the major problems in pregnancy that can lead to meconium staining. I have a nice video on this particular topic on in my own channel, that is Dr. Sonal's not Dr. Sonal, Ask Your Gynecologist. Go and check that out if you want to know about the disease. Okay? Intrahepatic cholestasis of pregnancy, there is increased perinatal mortality. Hence, fetal surveillance is done with bi-weekly CTG NST. Conventional antepartum testing does not predict fetal mortality, as there is sudden death in cholestasis due to acute hypoxia and meconium staining. Hence, delivery is recommended at 37-38 weeks. In those patients with jaundice, when serum bilirubin is so high, then termination should be done at 36 weeks. So, depending upon what the condition of the patient is, they've asked a general question: what will you do when the jaundice has developed in the third trimester? So, you have to basically assume that the baby should also be fine. So, select 38 weeks option. Okay. Rate of turnover of amniotic fluid is what? We did this in the chapter on the basics of pregnancy and amniotic fluid and placental membranes. What is the turnover rate?
Remember that? 500 cc per hour, 1 liter per hour, 1500 cc per hour या फिर 2 liters per hour. A, okay, you are right. It is A. Specific gravity of amniotic fluid is 1.008 to 1.01. Osmolality is 250. Completely replaced in 3 hours. So rate of amniotic fluid turnover is 500 cc per hour. Okay. Maximum amount of amniotic fluid is seen at how many weeks? Maximum कब मिलता है? That is probably when the fetal urine is maximum, when the kidneys are working well. So it starts forming at around 12 weeks because that is the time when the fetus starts forming urine. So amniotic fluid starts increasing. That is why we can do amniocentesis after 14 weeks. But what is the maximum amount of, when is the maximum amount of amniotic fluid found? 130. Okay, so we have B, and that is actually D. It is 38 to 40 weeks. Go and check this out because even I feel it should be 30 weeks because 38-40 पे तो generally थोड़ा कम हो जाता है because we are going towards term. So just check this out. I'm a bit confused in this. I'll have to check the theory as well. Everybody is answering B, so there has to be something. Just check this out. अभी ये किताब खोलो and let me know. अभी हाथों हाथ because I don't have my book right now with me. So check this out in DC Datta. Okay, their answer is 38 to 40. Uterus post-pregnancy becomes a pelvic organ in how many weeks? Post-pregnancy, immediately after delivery, the uterus is at the lower border of the umbilicus. But once the delivery is over, how many weeks it takes for the uterus to go inside the pelvis and become less than 12 weeks? That is what I am thinking, Bala, that 38-40 weeks पे तो कम हो जाता है. Practically also we see that the patients when they come at around 40 weeks, that is the time when their amniotic fluid is going down, and we tell them that is okay, that is quite normal. So initially 32-34 weeks they might have an amniotic fluid index of maybe say 11-12. After that it starts decreasing, becomes 9-8. It should not be below 8. That is oligohydramnios. So check this out in DC Datta. I am sure it must be given there. Otherwise at 4:30 p.m. today I will tell you the answer. I'll check in my book also. 4:30 p.m. in the evening special class on Unacademy. Okay, we will continue with these MCQs and I will tell you this answer. Okay, Akshay, thank you. So Akshay is giving us the answer that it is actually decreasing by 38-40 weeks, but it is still more than 30 weeks. So because we did not have the option after 30, they did not say 34. So probably we will say 38 to 40. Had it been 34 weeks, then probably this would have been the answer. Okay. Thank you, Akshay, but I will still check in my book. Okay. So let's have this answer. 131. One answer, we have one answer B, that is 6 weeks. Okay. Anybody else? Please answer 131. B. Okay, so we are having mixed answers. One is saying 4 weeks, two are saying 6 weeks, but I think the answer is 2 weeks. Yes, it is 2 weeks. By the end of 2 weeks, the uterus becomes a pelvic organ and it returns to its normal size at 6 weeks because pelvic organ बनने के लिए it has to become less than 12 weeks. After 12 weeks, once the uterus has gone above 12 weeks, that is the 4th month pregnancy has started, 2nd trimester has started, that is the time when the uterus becomes bigger and it crosses a pelvic brim and becomes an abdominal organ. So to attain that size of around 3 months, that is 12 week size, it just takes about 2 weeks, and after that 6 weeks तक ये पूरा normal pre-pregnant size, that is 7.5 centimeter हो जाता है. Okay, so 2 weeks is the answer. Assisted head delivery is done where? In brow presentation.
फेस प्रेजेंटेशन, परसिस्टेंट ओपी पोजिशन या फिर ट्विन प्रेजेंटेशन? आई एम सॉरी फॉर दिस टेक्निकल एरर, देयर इज सम टाइपिंग एरर जस्ट. सो असिस्टेड हेड डिलीवरी, असिस्टेड ब्राउ, फेस, परसिस्टेंट ओपी या फिर ट्विन? ओके, डॉक्टर आशमा इज सेइंग सी. डेफिनेटली ये तो होगा ही नहीं, बिकॉज ब्राउ में तो डिलीवरी होती ही नहीं है, नॉर्मल है ना. सो इट्स आइदर दिस और दिस. Everybody is going with C. Let's see. Yes, it is C. Occipital posterior positions. Practically 5 to 10% of women admitted in labor. I had a phased pubes delivery day before yesterday. कल की बात है, परसों शाम की बात है. She was a primey, very like normal size baby, 2.8 kg, but the baby just wouldn't come out, and because of the caput, it was very difficult to find out what is the problem. Okay, so we were trying the forceps and ventouse, and we could see the head sitting there but just not budging, and that was basically OP position. So I was suspecting this, but kind of because of the caput, we could not feel the sinciput and the occiput well properly. But it was a phase to pubes delivery delivered by forceps. Okay, so admitted in labor with cephalic presentations, present with OP. Given time and patience, many of these will rotate and get corrected. So this one did not rotate. 3/8 rotation बहुत मुश्किल होता है बच्चे के लिए. So basically they end up in instrumental deliveries. Okay, so they can deliver normally. So it is not phase, it is persistent OP. Okay, how many percentage of women delivering on their EDD? And that we have done many times. EDD यानी कि 40 वीक्स पे कितनी पेशेंट्स डिलीवर करती हैं एक्चुअली, जो हम डेट देते हैं ना नीगेल्स फॉर्मूला में कि दिस इज़ योर डेट ऑफ डिलीवरी, नीगेल्स फॉर्मूला, उस पर कितने पेशेंट्स डिलीवर करती हैं? थ्री मिनट्स लेफ्ट, विल डू सम मोर क्वेश्चंस. आई थिंक 3 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं. डॉक्टर आशमा, anyone else? Swaraj, okay, yes, the answer is 4%, that is true. Okay, so it's only 4%. Based upon the Nigel's formula, labor starts approximately, expected date is 4%. 50% का 1 week पहले या 2 weeks बाद में होता है. Inner cell mass differentiates into what? Chorion, trophoectoderm, embryo या फिर all of the above? Basics of reproduction. 58 cells, 55 and 3. No, 53 and 5. That is how they divide. Okay, Gaurav is saying C. Dr. Ashma D. Let's check the answer. It is embryo only. Okay, inner cell mass सिर्फ embryo बनाता है. Blastocyst enlarges. Okay, so that is the 16 cell stage morula में आता है in the uterus, and then it becomes a blastocyst because it develops a cystic cavity like this, which is supplying nutrition to the embryo, and the zona pellucida has hatched. Zona pellucida गई. This is called zona hatching. The cells on the outer side cells जो 53 cells होते हैं, they become chorion. एंड द इनर सेल मास जो यहाँ डेवलप होता है दैट बिकम्स एम्ब्रियो. तो ये पूरा प्लासेंटा बन जाता है, और ये जो सिर्फ 5 सेल्स होते हैं ये एम्ब्रियो बनते हैं. सो द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स इनटू द एम्ब्रियो. ओके, सो दैट इज व्हाई आई वाज राइटिंग 53 and 5. सो 53 सेल्स यहाँ आ जाते हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म एंड कोरियन, और बाकी के 5 सेल्स बनाते हैं एम्ब्रियो. सो दिस इज द आंसर. ठीक है. एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस आफ्टर हाउ मेनी वीक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन या फिर कंसेप्शन? पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि डे 14 पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसके कितने वीक्स बाद तक वो फीटस हो जाता है? एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस आफ्टर हाउ मेनी वीक्स? वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स. रिमेंबर, अगर ये 14th डे से पूछ रहे हैं तो दैट विल बी LMP यहाँ होता है, तो यहाँ पर 14 डेज का गैप है. ठीक है, तो अब ये बच्चा कब फीटस बनेगा? अभी तक तो ये एम्ब्रियो ही है, अभी तक तो ये एम्ब्रियो चल रहा है. ये यहाँ से पूछ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछ रहे हैं, हाउ मेनी वीक्स. ओके, सो B, A, anyone else? A,
ओके तो ये आपके कंसेप्ट पुअर है. इट इज़ 8 वीक्स और 8+2 करेंगे तो वो उसका जेस्टेशनल एज आ जाएगा, बिकॉज वो LMP वाला जो 2 वीक्स है वो हम ऐड कर देंगे. ठीक है, दैट विल बी द जेस्टेशनल एज. तो अगर जेस्टेशनल एज देखें तो एक 10 वीक्स का बच्चा जो कि सोनोग्राफी में जिसको 10 वीक्स आ रही है साइज, दैट इज द फीटस नॉट एम्ब्रियो. ओके, सो इट इज 8 वीक्स पोस्ट fertilization. Okay, embryonic period begins at the 3rd week following ovulation and fertilization. यानी कि 14th डे तो क्या हुआ, 14th डे इज द 2 वीक्स, उस समय तो फर्टिलाइजेशन हो गया. उसके करीब करीब 5-6 दिन बाद वो प्रॉपर इम्प्लांटेशन होता है. सो देन इट बिकम्स एन एम्ब्रियो. वहाँ से स्टार्ट होके 8 वीक्स पोस्ट कंसेप्शन यानी कि नेक्स्ट मंथ की जो साइकिल है वहाँ तक हो जाता है. यानी कि 2.5 महीना 10 वीक्स पे फ्रॉम LMP इट बिकम्स अ फीटस. ओके, सो 2.5 months 10 वीक्स इज फीटस. और क्योंकि इन्होंने 10 को ऑप्शन इसलिए नहीं दिया बिकॉज दे आस्क्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. अगर ये पूछते पोस्ट LMP तो 10 वीक्स होता. तो इट इज़ नॉट 6, इट इज़ 8 या फिर 10 अगर पोस्ट LMP पूछते तो. फीटल पीरियड बिगन्स आफ्टर 8 वीक्स पोस्ट कंसेप्शन, 10 वीक्स फ्रॉम LMP एंड एंड्स इन डिलीवरी. जब तक डिलीवरी नहीं होती फीटस ही रहता है. ठीक है. यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन एस्टैब्लिश्ड डेज, हाउ मेनी डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अगेन बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन्स. हाउ मेनी वीक्स आफ्टर, हाउ मेनी डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्चुअली. सो डे 14 पे फर्टिलाइजेशन हो गया. दिस इज द LMP हियर. यहाँ पर 14 डेज का गैप है. देन इसकी नेक्स्ट साइकिल भी 14 डेज बाद आएगी जो कि स्किप हो गई. नो मेंसेस आई नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई. नाउ यहाँ से लेके कितना टाइम लगता है फीटल सर्कुलेशन को आने में. 136. MCQs करते हैं तो आपको चैप्टर याद आता है. आप चैप्टर में ये चीज़ भूल चुके होते, इसको वापस एक बार रिवाइज कर लो. 1 लाइनर्स इसकी जो टेबल्स बनी हुई होती हैं वो मेन पॉइंट्स याद कर लो. ठीक है, गो थ्रू द लेक्चर्स अगेन, गो थ्रू योर नोट्स अगेन. ओके, सब लोग C कह रहे हैं. आई थिंक इट इज़ D. नो, इट इज़ 10. ओके 10. ओके, इट इज़ 10 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो इट इज़ 14 + 10 यानी कि 24 डेज फ्रॉम LMP, यानी कि 3 वीक्स. 3 वीक्स यानी कि यहाँ से अगर आप यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन इज इस्टेब्लिश 10 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो इसमें 10 कर दिया तो ये 24 हो गया. आई वुड स्टिल थिंक दैट इट इज़ प्रॉबली नॉट 10 डेज, बिकॉज देखो हाँ 10 डेज ही होगा, बिकॉज 14th डे पे फर्टिलाइजेशन हुआ. अराउंड 21st डे यानी कि 7 डेज तो उसको लग गए इम्प्लांट होने में. अब इम्प्लांटेशन के बाद ही तो प्रॉपर फीटल सर्कुलेशन आएगा. तो 21 डेज 7 डेज हो गए और बाकी के 3 दिन उसको लगेंगे. 21 + 3, यस इट इज़ 10 डेज. यस इट इज़ 10 डेज, बिकॉज 14th डे तो वो ट्यूब में मिल रहे हैं स्पर्म एंड ओवा. इट टेक्स अनदर 4-5 डेज टू कम टू द यूट्रस. सो 14 + 5 डेज तो ये हो गए. Another 5 days it will implant, it will invade the spiral arterioles of the mother, intervillous space बनेगी. So it is 10 days. Yes, okay, this is how you remember. Okay, so I was thinking it should be 20 days, but 20 days बहुत ज़्यादा है. 10 days यानी कि just next menses आने के पहले. तो 14th डे तो फर्टिलाइजेशन हो गया. 10 डेज यानी कि 24th डे पे यहाँ पर जस्ट बिफोर द नेक्स्ट मेंसेस 28th डे पे आता है. उससे पहले फीटल सर्कुलेशन इस्टेब्लिश भी हो गया, हार्ट ने भी बीट करना शुरू कर दिया. ठीक है. So that is how you remember. Uteroplacental circulation is established 9 to 10 days after fertilization. Fetoplacental circulation established 21 days post fertilization. तो इन्होंने क्या uteroplacental circulation पूछा था. Uteroplacental is mother maternal spiral arteries और ये है umbilical vein and umbilical artery. तो इसको 21 डेज लगते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि नेक्स्ट साइकिल तक चला गया. ओके, और यहाँ पर ओनली 10 डेज. सो ये विद इन द सेम साइकिल हो गया और उसके जस्ट 10 डेज बाद फीटल सर्कुलेशन. सो रिमेंबर फीटोप्लासेंटल इज डिफरेंट, यूट्रोप्लासेंटल इज डिफरेंट. ठीक है. सो आपके साथ साथ मैं भी रिवाइज कर रही हूँ बिकॉज दीज थिंग्स आर रियली वेरी वॉलेटाइल. तो आज हम पढ़ रहे हैं तो अब हमको याद रहेगा 7 दिन तक. ठीक है. 137 प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. किसमें प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है? प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, आइजनमेंगर सिंड्रोम, मार्फन्स विद एओर्टिक रूट डायलिटेशन एंड WPW सिंड्रोम.
Okay, do we have answers? Okay, 137. 137 का ADAD. ओके, इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन WPW सिंड्रोम बिकॉज ये सारे बहुत ही रिस्की प्रेगनेंसीज है. आइसेनमेंगर्स में प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है बिकॉज ऑफ लेफ्ट टू राइट शंटिंग और सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता है. मार्फन्स में ऑलरेडी एओर्टिक रूट डायलिटेशन है, दैट इज अ वेरी रिस्की कंडीशन. WPW क्या होता है? लेट मी जस्ट रीड दिस आउट फॉर यू. इट इज वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. इट इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट. About 60% of the people with electrical problem developed symptoms which may include abnormally fast heartbeat, shortness of breath, palpitations, lightheadedness and syncope, and this can be managed. Pregnancy is not contraindicated. बहुत rarely इसमें cardiac arrest होता है. So it is only WPW syndrome, ठीक है, जिसमें कि contraindication नहीं है. Which heart disease has the worst prognosis and maximum mortality in pregnancy? Mitral stenosis, aortic stenosis, is it aortic stenosis? Yeah, PDA, persistent ductus arteriosus, या फिर Eisenmanger syndrome. So that is heart disease in pregnancy. I think that should be our last question for today. Yes, we have done 34 minutes and this is the last question for today, and then we will continue in the evening. WPW is ventricular tachycardia with delta wave. Okay, thank you Akshay. Thank you for enlightening us. So you're reading well, and are you preparing for this exam after 7 days? Okay, 138 BABD. Okay, worst prognosis, I would say it should be Eisenmenger's. Let's see. Yes, it is Eisenmenger's, and that is true. Good Akshay. So it is Eisenmenger syndrome. If you read Eisenmenger's, you will come to know it has a lot of problems. Eisenmenger's has pulmonary hypertension. See, there is a long standing left to right cardiac shunt caused by congenital heart defect, typically by VSD, ASD or less commonly PDA. So all these can lead to Eisenmenger's, and eventually there is a pulmonary hypertension and reversal of shunt into cyanotic right to left shunt. So that is the worst prognosis, Eisenmenger syndrome. Okay, so that is it guys. All the best for the exam, और हम शाम को वापस मिलेंगे. As I told you, daily we are doing MCQs. आज एक क्लास है, कल भी एक क्लास है, संडे तक एक क्लास है. लास्ट वीक 16, 17, 18, 19, 20 डेली दो क्लासेस हैं, ठीक है. यूट्यूब पे मॉर्निंग में और इवनिंग में हम लोग दो क्लासेस करेंगे MCQs की, सो दैट वी कैन डू मैक्सिमम MCQs. ओके, सो बाय बाय.